सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, क्या बोल रहे जोशी जी? देश के तोड़ने का बात किया है सर, देश का तोड़ने का बात कल जो किया है, अब बजट के रिएक्शन देते हैं उसके बारे में हम उसे रखना चाहते हैं सर। श्री प्रेमचंद गुप्ता, श्री नरेश बंसल, on their birthdays. Shri Sant Balbir Singh birthday is today, and of the other two, it is tomorrow on 3rd February. For them, advance birthday greetings. Shri Sant Balbir Singh has been a member of this August House since July 2022, representing the state of Punjab. He is a renowned environmentalist, social reformer, and spiritual leader. He has also been Sarpanch of his native village, Sichewal, twice, and has won the Nirmal Gram Award for his village in 2008. He has been honored with several prestigious awards, including Padam Shri in 2017 for his pivotal role in conserving holy rivulet Kali Bean. Shri Premchand Gupta, currently member of this House since April 2020, is in his 5th term in the House of Elders. 5th term. He is a former Union Minister also. He is also the leader of the Rashtriya Janata Dal in Rajya Sabha, a former Union Minister, and Shri Gupta is a trained pilot. Yes? Am I right, sir? He is married to Srimati Sarla Gupta and is blessed with 2 sons, Mayur Gupta and Gaurav Gupta, and 1 daughter, Shalini Agarwal. Shri Naresh Bansal has been member of Rajya Sabha since November 2020. Shri Bansal had served in various capacities in Uttarakhand before entering political life. He is married to Srimati Akshma Bansal and is blessed with 2 sons, Kunal Bansal and Siddharth Bansal, and 1 daughter, Megha Bansal. Honorable members, on behalf of this House, I wish them a long, healthy, and happy life and extend greetings to their family members. Papers to be laid on the table. Shri Danve Rao Sahib Dada Rao. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे अपने नाम के सामने क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित कागज को सभा पटल पर रखता हूं। श्रीमती Anupriya Singh Patel. Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 2 in the list of business for today. Srimati Darshana Vikram Jardosh. Honorable Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentions against my name at the serial number 3, Ministry of Textile, as the today's revised list of business. Shri Som Prakash. Inspector Sir, with your kind permission, I lay on the table of the House paper listed against my name at serial number 4 in the list of business for today. Thank you. Statements by Ministers. Shri Rajiv Chandrasekhar. Is to make a statement on behalf of my colleague Shri Ashwini Vaishnavji. Sir, I would like to lay the statement appendix showing implementation status on the recommendations, observations contained
in the 45th report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on demands for grants 23-24 pertaining to the Ministry of Electronics and Information Technology on the table of the House without taking valuable time of the House. Thank you, sir. Sri Som Prakash. Sir, with your kind permission, I make a statement regarding status of implementation of recommendations contained in the 182nd report of the Department-related Parliamentary Stadium Committee on Commerce on Ecosystem of Startups to benefit India. Thank you, sir. Announcement regarding Business Advisory Committee. I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee in its meeting held on 1st February 2024 has allotted time for government business as follows. Discussion on the motion of thanks on the President's address, 14 hours. General discussion on the interim union budget for 2024-25, consideration and return of the appropriation bills relating to the following demands after they are passed by Lok Sabha. 1. Demands for grant on account for 2024-25. 2. Supplementary demands for grants for 2023-24. Consideration and return of the Finance Bill 2024 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha. General discussion on the interim budget for Union Territory of Jammu and Kashmir for 2024-25, consideration and return of the appropriation bills relating to the following demands after they are passed by Lok Sabha. 1. Demands for grant on accounts of Union Territory of Jammu and Kashmir for 2024-25. 2. Supplementary demands for grants of Union Territory of Jammu and Kashmir for 2023-24. All these taken together, 8 hours. Consideration and passing of the following bills after their introduction. The Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024, 2 hours. The Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024, 2 hours. The Constitution Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2024, taken together with the Constitution Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024, 2 hours. The committee also recommended that the lunch hour may be skipped on the remaining sittings of the House during the session in order to dispose of the business before the House. A statement regarding government business, Sri V. Muralidharan. With your permission, sir, I rise to announce that government business for the remaining part of the 263rd session of Rajya Sabha will consist of 1. Consideration of any item of government business carried over from today's order paper, which contains discussion on the motion of thanks on the President's address. 2. General discussion on interim Union Budget 2024-25. 3. Consideration and return of the appropriation bills relating to demand for grants on account 2024-25 and supplementary demands for grants 23-24. Consideration and return of the Finance Bill 2024 after it is passed by Lok Sabha. 5. General discussion on interim budget for Union Territory of Jammu and Kashmir and return of the appropriation bills relating to A. Demand for grants on account of Union 25 and B. Supplementary demands for grants of Union Territory of Jammu and Kashmir 23-24. 7. Consideration and passing of the following bills after their introduction. A. The Water Police Laws Amendment Bill 2024. Honorable members, one second. Honorable members, they have matters of urgent importance which in their wisdom needs to be raised in the House.
I would appeal both House must follow the rules and maintain absolute discipline. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही गंभीर घटना जो कल घटी है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक एक वक्तव्य प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता, जो कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है लेकिन एक कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री के भाई हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, संसद सदस्य भी हैं। What is your point? उन्होंने कल एक वक्तव्य किया, वी विल बी फोर्स्ड टू डिमांड अ सेपरेट कंट्री। फिर वो कहते हैं देयर वाज नो अदर चॉइस। फिर वो आगे कहते हैं देयर वाज नो अदर चॉइस बट टू आस्क फॉर अ सेपरेट कंट्री। all southern states have to raise their voices demanding a separate nation. माननीय अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस की जो विभाजनकारी सोच है, जिस प्रकार से शुरू से इतिहास में हमने कांग्रेस का व्यवहार, उनका काम करने की पद्धति और देश को बांटने का काम कांग्रेस ने समय समय पे किया, ये इसका एक और उदाहरण है। माननीय अध्यक्ष जी, जब हम सदन में आते हैं तो आज के दिन तो चुनाव लड़ने के लिए भी एक शपथ लेनी पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहती है कि जब हम सदन के सदस्य बनते हैं तो हम शपथ लेते हैं। आई solemnly affirm और I swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India and faithfully discharge the duty upon which I am doing. माननीय अध्यक्ष जी, अब ये छोटी मोटी घटना के रूप में हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ ये देश को बांटने की सोच है। जिस प्रकार से देश के संविधान के ऊपर ये आहत है, देश के संविधान का अपमान है, जिस प्रकार से देश की एकता और अखंडता के ऊपर ये अपमान किया गया। हम जब शपथ लेते हैं तो देश की सॉवरेनिटी, देश की इंटेग्रिटी ये सर्वप्रिय होती है, सर्वप्रथम रहती है। और माननीय अध्यक्ष जी, किस दिन उठाया जाता है? जब माननीय वित्त मंत्री एक देश के सामने विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, देश के सामने अमृत काल में कैसे देश आगे जाएगा, ये पूरा विश्व कल देख रहा है कि देश किस प्रकार का मैसेज पूरे विश्व में लेके जा रहे हैं। उसी दिन ऐसी विभाजनकारी सोच, देश को तोड़ने वाली सोच, मैं समझता हूं कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस पर स्पष्टीकरण करना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी इस वक्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ती है? क्या कांग्रेस की सोच में देश की एकता और अखंडता या देश का संविधान कोई मायने रखता है कि नहीं? क्या वो देश को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटना चाहते हैं? ये कांग्रेस की सोच के बारे में मैं डिमांड करता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष संसद में और पूरे देश के सामने स्पष्टीकरण करें। ये विभाजनकारी सोच कांग्रेस की कदापि भी देश स्वीकार नहीं करेगा। मैं घोर निंदा करता हूं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, उनकी सोच की, और माफी मांगता हूं कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगे इस वक्तव्य के लिए और स्पष्टीकरण करके उनके सदस्य से भी ये स्पष्टीकरण आए कि देश की एकता और अखंडता के लिए जो हमने शपथ ली है वो उससे सहमत है या नहीं, भारत के संविधान में वो विश्वास रखते हैं या नहीं रखते, और उनके कांग्रेस की पार्टी की स्पष्ट नीति क्या है वो देश के सामने आनी चाहिए। लीडर ऑफ द पोर्शन, प्लीज टेक लीडर ऑफ द पोर्शन। ऑनरेबल मेंबर्स, सर एलओपी सर, पूरी बात सुन के तब दीजिएगा। वन सेकेंड सर, ऑनरेबल लीडर ऑफ द पोर्शन। सर, ये इस वक्तव्य के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वो इस सदन के सदस्य नहीं है। इस सदन के सदस्य जो नहीं होते वो लोअर हाउस के यानी लोकसभा के सदस्य हैं। रूल्स में ऐसा कोई नहीं है कि
नहीं आप एक जरा सेकंड ये सुनिए अब कम एलओपी को तो बोलने दीजिए सर। प्लीज 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 नहीं अरे तुमसे भी ज्यादा बैठो चुप पुकारते रहे सर। ऑनरेबल मेंबर्स अरे सर One आप second. उनकी उतनी बात सुनने Please. के बाद मेरी तो नहीं सुनते। नहीं on this point, honorable leader of the opposition, you had raised a point of order when an issue about Rahul Gandhi ji was raised by Mr. Piyush Goyal. I had given my ruling on that, and my ruling was very categorical that our rules provide that this House is well within the rights under the rules to discuss the conduct even of a member of Lok Sabha. If there are allegations to be leveled, one sec. If there are allegations to be leveled against a member of Lok Sabha, then a notice is required to be given to the chairman. And I had given my ruling that when Piyush Goyal ji, leader of the House, raised that issue, Mallikarjun Kharge ji took exception. Please go through that ruling of the chair. The ruling is very categorical. Well, you see, sir, anything said against the law which is established in this house, which is enacted a business transaction rule, that cannot be allowed. Let them raise. The Prime Minister is the leader of that house. Let him raise it. Ask and bring the video. Expose simply. No, leader of the opposition is on his lips. आप अकेले देश के एकता के लिए तो हमारे लोग दो लोग जान दिए। तुम क्या बोलते हो? देश के बारे में हमारे कांग्रेस के लोग अपनी कुर्बानी दी है। तुम क्या है? ये कुत्ता भी नहीं मरा तुम्हारे पास। Honorable members, please take your seats. Honorable members, please take your seat. Take your seat. Take it. 1 second. I'll look into it. I'll look into it. Honorable members, please, let the temper cool. We all have taken an oath under the Constitution. And any outrage of that oath is a serious matter, raising serious consequences. But coming to what the leader of the opposition has said, my ruling was very categorical. I had taken recourse to the rules. The rules of this House provide that if an issue regarding a member of the other house is to be raised here, that can be done. But if allegation is leveled against that particular member, then notice is required to be given to the chair. Now, in that specific case, when the honorable member of the Lok Sabha and leader of the Congress party had made observations outside the country, I had held twofold. One, his conduct can be debated, discussed, deliberated in this House. And secondly, after going through the record, forcing leader of the House to put everything on the table of the House, I had concluded that leader of the House had only quoted the observations imparted by leader of the Congress party outside the country. And that was my ruling. That I decided very categorically. From that perspective, Khargeji's observation that the gentleman who happens to be member of the Lok Sabha and who, according to the leader of the House, has made an observation which I think is unprecedented, too severe to be countenanced, contrary to the oath, contrary to the spirit and essence of Constitution. I am sure the entire House will be one. And it is for all of us in togetherness to see that such kind of tendencies do not get into a groove. They need to be nipped in the bud. I am on that point. So, if you are taking, Honorable Leader of Opposition,
a technical plea that has been determined by the House. Please, please, please. Only leader of the opposition, please. Only leader of the opposition. Everyone will observe silence. देखिए सर, This is a very, very serious matter. Please. सर, Please, sir. तो मैं दो ही शब्द बोला कि एक तो वो सदस्य नहीं है, दूसरा उन्होंने, मैं सुना कि आज के टीवी में कि उन्होंने कहा मैं ये नहीं किया हूं, अगर किया है तो प्रिविलेज को वहां पर भेजने दो, वो करने दो। तीसरी बात बोलता हूं, अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात किया हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे मेरे पार्टी का हो, चाहे उनके पार्टी का हो, चाहे और किसी के। इस देश को एकता रखने के लिए कोई कहे या नहीं कहे, मैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे होके कहूंगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं, एक रहेंगे, एक देश रहेंगे। इसीलिए इंदिरा गांधी अपनी जान दी और राहुल गांधी जी अपना जान, सॉरी राजीव गांधी जी, सॉरी बोला, सॉरी, आई एम सॉरी, कैन विड्रॉ इट। सो राजीव गांधी जी जान दिए। अरे ऐसी पार्टी कभी ऐसा देश तोड़ने की बात करती है और देश को अलग बनाने की बात करती है, हम कभी इसको सहन नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज उन्होंने नहीं बोले, नहीं कहे, उसको यहाँ पर दोहराना ठीक नहीं। One second. Honorable members, making a statement is fine. Fact of the situation is that nationally and globally, a message has emanated in public domain that a member of parliament had categorically said so. I direct, invoking my authority, Leader of the House, Piyush Goyal, to put it on the table of the House. And these issues cannot be taken lightly. It is not an issue which is in the domain of the other House. It is equally our prerogative, our constitutional ordainment, and such a person is required to be visited with exemplary consequences. I will look into it, and what you put on the table of the House, Leader of the House, you will put it on the table of the House, and I direct my secretariat to share it immediately with Leader of the Opposition. Yes, sir. I will place it is in Kannada, the recording. No, put it on the table of the House. Sir, put it on the table of the House. Sir, one more point. I have already written a letter to you regarding the... Sir, I have not received your letter, but I have received your message. Message in... No, the writing I have given. Sir, your no, whatever. Okay, sir, your message, apart from that letter. Your okay, thank you, was sir. Good enough to see me. Thank you. Sir, in Jharkhand, one issue has arisen. 1 second. Please, listen to him. These are उसमें जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर रिजाइन किए, करने के बाद इमीडिएटली उन्होंने अपने सक्सेसर का नाम दिया और सपोर्टर्स की लिस्ट दी और नियरली 43 का सिग्नेचर था और 4 लोग अभी बाहर थे, 47 लोग। What is the point, sir? What is the point? 47 के ये थे और साहब उन्होंने प्लीज साहब उन्होंने भी उसके बारे में कोई अगली व्यवस्था नहीं बनाई। ऑलवेज क्या होता है कि हम भी पॉलिटिक्स में हैं, आप भी जानते हैं कि इमीडिएटली क्या बोलते हैं, टिल अल्टरनेट अरेंजमेंट ही मे बी कंटिन्यूड। और अरे सुनो भाई, बाद में कुछ तो बोलो। और इमीडिएटली जब लिस्ट देते हैं उसको, आप इमीडिएटली बुला के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हो। लेकिन इस केस में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया और आज 12:30 बजे वो वोट एक में ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक तरफ यानी देखिए संविधान के धज्जे कैसे उड़ाए जा रहे हैं, एक तरफ हमारे नीतीश कुमार जी इधर रिसिग्नेशन देते हैं, उधर वो वोट लेते हैं। तो
ये क्यों नहीं हुआ? झारखंड में ये क्यों नहीं हुआ? अगर वो हो सकता है 12 घंटे में रिसिग्नेशन हो सकता है, 12 घंटे में लिस्ट सबमिट हो सकती है। सर 1 मिनट 12 घंटे में लिस्ट होती है, 15 मिनट में उनको बुलाया जाता है, 5 मिनट में वोट लिया जाता है, 2 मिनट में दूसरा चीफ मिनिस्टर बन के उनको वोट दिया। ये शर्मनाक बात है, ये तो धज्जे उड़ाएगी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जे आप उड़ा रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि झारखंड में इतना बड़ा कांड हो, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार साबित हो, किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जमीन का घोटाला किया, इस सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी अभी भी उन मुख्यमंत्री के बारे में उनको डिफेंड कर रही है, उन मुख्यमंत्री के काम के बारे में कुछ स्पष्टीकरण नहीं दे रही है, भ्रष्टाचार के विरोध में कोई बात नहीं कर रही है। ये पुनः स्थापित करता है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में है, कांग्रेस भ्रष्टाचार को स्वीकार करता है। रही बात गवर्नर की, माननीय अध्यक्ष जी, गवर्नर का कंडक्ट को इस हाउस में तो नहीं डिस्कस होता है, मिस्टर इलामाराम संविधान इनको और इतने सारे कोर्ट के केसेस हुए हैं जिसमें गवर्नर को ठहराया गया है कि उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई करना है। ऐसे ही एक लिस्ट कांग्रेस ने तो पहले भी लिस्टें दी है, जिसका बाद में पता चलता है कि सिग्नेचर ही और किसका है, बिना पूछे भी सिग्नेचर दे देते हैं। तो कांग्रेस का जो व्यवहार है, कांग्रेस लीडर ऑफ द हाउस डॉक्टर केशव Sir, my thing is, I have also raised this issue in this morning. Dr. Keshav. This morning I raised this issue and the chairman was so kind that he had called me and said that he has with him the papers and documents which show that the chief minister was asked to continue till the next meeting. I said, unless the notification is shown to us, we will not agree because this country can't run without a constitution. Constitution says there has to be a government. Government has to be headed by chief minister. Whether the chief minister is this man or that man, we are not bothered. Whether Nitish goes in within 5 minutes or 10 minutes. Thing is, we have not shown the notification. There was no need for them to walk out. If you were to only tell us that there was a notification, there was a nod that that particular chief minister who had resigned what to continue till the next arrangement is made. I didn't say. I said we need to look at the notification. Yeah, yes. But you said you had the notification. If it is not there, then my point still remains that this country has to run through a constitution. 1 second. Yes. No. Yes, ma'am. That when there is a member of the other house talking about breaking this country, we are being told on technical grounds you can't discuss that. But we are happily discussing the conduct of a governor who knows his position, and the walkout is in favor of the corruption. Honorable members. Sir, very senior member Keshav Raoji should listen to what I'm saying, just as I've listened to him, rather than getting up and speaking in between with such protest. The entire opposition has walked out in favor of corruption, and when we are talking about eliminating corruption, rather than saying why they want to walk out, they are coming in. We are reminded we can't speak about the other house member, even if he is planning to break this country. But here are they questioning the functioning of the governor? Doesn't the governor know what to do? And this kind of a conduct against a constitutional authority by a party which has been in power for more than 45-50 years is despicable, sir. And Honorable Member Keshav Rao ji, please do listen to what I'm saying rather than getting up to disrupt me. You may be a senior member, but I'm sorry to say, I'm sorry to say that the questioning of governor's conduct by the Congress party, particularly when the issue pertains to stopping corruption in a state, is astonishing. To walk out on that, sir? 1 second. Honorable, one second, please. Honorable members,
Honorable members, please, I'll give you floor. Honorable members, one second. Take your seat, take your seat, take your seat. Honorable members, on 5th April 2023, I had imparted a ruling, and I was called upon because leader of the opposition, Sri Mallikarjun Kharge ji, wanted a ruling on that. I quote, on March 13, 2023, the Honorable Leader of Opposition, Sri Mallikarjun Kharge, responding to the assertions of Leader of the House, Sri Piyush Goyal, who demanded apology for shameless way by which a senior leader of the opposition in a foreign country has attacked the democracy of India, insulted Parliament of India, unquote, raised a point of order that there could be no discussion, reflection in the Rajya Sabha on or about a member of the Lok Sabha or anyone who is not a member of the Rajya Sabha. I concluded, after bestowing earnest consideration on this momentous aspect, I am of the firm view that there can be no issue or individual beyond the purview of discussion in the Rajya Sabha, and the same is exclusively subject to regulation by the House and the Chairman. The two precedents relied upon by the Honorable Leader of Opposition have no bearing on the issue being determined herein. I further took note of the situation that notice had to be given to me if you level allegations against a member of Lok Sabha, and that is further the authenticated record made available by Leader of the House, Shri Piyush Goyal, bears out that his demand of apology on the overseas statements made by a senior leader of opposition is factually premised and does not graduate to making allegations of a defamatory or incriminating nature. The documentation submitted by Leader of the House as per directive bears out his assertion imparted in Rajya Sabha on March 13, 2023, same being in consonance with fact situation. In view of categorical and firm constitutional prescriptions, I cannot persuade myself to sustain the point of order raised by the Honorable Leader of Opposition, Sri Mallikarjun Kharge, and the same is hereby declined. Now, what is really worrisome is that if a senior person and leader of the opposition rakes up the same issue on the same premise that we can't discuss it, whether we discuss it or not is prerogative of the House. But we can discuss, and honorable members, the issue raised by Leader of the House is existential one. It is very severe, serious. I'll give you floor. Yes. Yes. That you are taking it up. And in that perspective, I have directed Leader of the House to put on the table of the House the document that bears out a statement of the Member Parliament concerned. Sir, I will immediately place on record the clipping which he has, the Honorable MP has made the statement in Kannada. It's in Kannada. It's the same language that the Honorable Leader of the Opposition also knows very well. I'm sure he'll be able to understand what is said in that. But sir, it is an outrage of the Constitution, outrage of the oath that we have all taken to become members of Parliament, to become public servants. And it is to be noted, sir, that the Honorable Leader of the Opposition has not condemned the statement made by his senior colleague, has not condemned the statement by a member of Parliament of his party, despite him being the brother of the Deputy Chief Minister of their state. And it clearly shows that the Congress party is not entirely against the views of the Honorable Member of Parliament from Karnataka. In some sense, it is important that the Honorable Leader of the Opposition, who is also the leader of the Congress party, the president of the Congress party, should not only apologize to the nation
but should condemn his member of parliament's views, apologize to the people of India. 140 crore people today are feeling outraged by the comments, the divisionary thinking of the Congress party. Honorable members, I must first, one second. I must put on record that Dr. Keshav Rao had seen me in my chamber and had raised an issue of constitutional situation. When I confronted him whether he had seen the notification, neither he had seen it nor I had seen it. And he was good enough to say without that would again leave an issue open to us whether we can discuss conduct of a constitutional functionary in this house where provisions are made. So lay your hands on that notification, and after going through the notification, if you feel rules permit, you may raise. If rules do not permit, are subservient to the law, the constitution. What I'm saying about a situation where the constitution is silent in 74, when it is silent, there will be democracy, there cannot be vacuum. So once you resign, the governor either asks, the person concerned, it's not governor at all, please, I'm withdrawing that, alternative arrangements are made, or immediately take, as in Bihar you have done in others. I said it has come. I am not aware of the contents. Yes, you don't know the contents. I am not aware of the contents. Yes. So the courts, where we without a government, can there be a state, some kind of a provision which fills in the vacuum? Sir, I think these are just diversionary tactics that different members of the opposition are raising. First the leader of the opposition, now the leader of another party. I don't know what is the connection between the two. They are trying to divert the issue from a very, very big corruption scandal in the state of Jharkhand. The important issue is the corruption in Jharkhand. The important issue is the outrage of India's constitution. And they are just trying to divert the issue to try and defend a corrupt chief minister of Jharkhand. Speaks. Corruption is only a binding matter. Well, you understand? Well, Constitution talks about the government. I'm not talking about how the government. Now, what Piyushji does in the ministry, I'm not concerned. See, you don't know. See, you must know the law. Law is one thing which governs. Honorable Finance Minister wants to say something. Yes. There are two on the top of on our table now. One is about a member of parliament belonging to the party to is the president, talking about dividing this country, sitting member of the House, Lok Sabha. And here we are being lectured on technicalities you can't speak about, and your ruling, which you've taken all care to read it out in full, says that this is not beyond this House to talk if it is a matter order. The leader of the opposition and his entire party has chosen to walk out on a matter which is on dividing this country by a member of their own party, sitting member in Lok Sabha, on an issue like this, where he claims, the leader of the opposition claims, we've given lives for the country. Not the entire party. No, I'm just... it's all right, one sir, honorable member is here. It's all right, sir. You may correct me on that ground. But the fact remains, he represents that party sitting here as a leader. My concern is a major issue of separatist language by a member who's in Lok Sabha of that party. And instead of outright condemning it and saying nothing can be before us when we talk about the integrity and sovereign unity of this country. Instead of saying that, we are being lectured on technicalities. Your ruling is not even being heard. Your ruling, which is being a precedent which you yourself sitting in the chair is quoting, is not even being heard by the members of the opposition. And they choose to walk out on an issue which is on unity of this country. And this House, whether you are in Rajya Sabha or Lok Sabha, what more can be important than the unity of this country, sir? At that time, we have learned senior member
from another party in the opposition talking to us about the role of the... Honorable members. This is diversionary. This is diversionary. We need to address this question of whether this country can be divided, even as a wishful thinking, Honorable by a member in members, the Lok Sabha. we Can represent... any member here talk of anything else more important than that? Honorable members, one second. Please, one second. Please, sir. Please, nothing will go on record. Nothing will go on record. Honorable members. Oh, one second. Please take your seat. Nothing will go on record unless I say, please, sir, please. Honorable members, one second. Jharkhand ka nahi hai. Honorable members, any challenge to the integrity of this nation. One second, sir. One second, sir. Listen to me, sir. Nothing will go on record, Dr. Keshav. Nothing. Dr. Keshav, nothing. No. No. Can you? I am sure, honorable members, I have no doubt we represent 1.4 billion people. And it is our constitutional obligation. Any challenge, I am making a general proposition, and no one should disagree with that. Any challenge to the sovereignty and integrity of this nation has to be resisted with the full might of every institution. And this house, this house is seized of the matter. And I would greatly appreciate that the House in one voice reflects the mindset of 1.4 billion people, that such an attempt from any quarter, within or outside, has to be met with unitedly, effectively, and has to be neutralized. Matters to be raised with permission. Sri A.D. Singh, not present. A.D. Singh, oh, I should have noticed your presence. I'm here, sir. India is the third. Can I start or will he speak? He has a point of order. One second. You are raising point of order under which rule? 8 sub point 5, sir. 230? Rule 238.5. A member, while speaking, shall not reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms. So, Honorable Leader of the Opposition, he referred to a constitutional authority without having submitted a motion and having the motion accepted by the Honorable Chairman. So, therefore, whatever he said must be expunged from the record, sir. Because this pertains to a very high constitutional authority. Thank you. Narasimha, this will look after. Please, Mr. A.D. Singh. India is now the third largest aviation market in the world, and various airlines are increasing the number of aircraft that they are buying, and the government is also expanding the aviation network around the country. But unfortunately, with the kind of planes that the Indian aviation industry has ordered, correspondingly, we don't have that much of pilots who can do their job, because there's a lack of availability of pilot, and particularly for that Cat 3 where landing training is also not there. And government has various, as of now, 34 DGCA approved flying training organizations are in the country. Some training centers operate simulators. Private flying academies are also getting licensed. Airlines are also going ahead with their own training program, but all this is not sufficient. The training facilities in India is grossly inadequate. There is an urgent need for more pilot training and flying institutes. DGCA should play a decisive role to coordinate flying training organization, pilot training in airlines and various examinations, etc., connected with the training of pilot. I urge the government to take urgent steps so that there is no shortage of pilots in the country in the future. Thank you. Thank you, Mani Sri A.D. Singh ji. Mani Sri Rajiv Shukla ji need to address alarming rise in student suicides in the country.
धन्यवाद उपसभापति जी। मैं एक अति महत्व के प्रश्न पर आज सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जिस तरह से छात्रों की आत्महत्या हो रही है, जिस तरह से कोटा अन्य जगहों पर छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, वो एक गंभीर विषय है और इसमें पूरे समाज को सोचने की बात है। किसी सरकार को दोष देने की बात नहीं, राज्य सरकारों को दोष देने की बात नहीं। ये एक बड़ी विकराल समस्या खड़ी हुई है। 35,000 छात्रों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि कोई फेल हो गया अगर किसी एग्जाम में, कोई अगर जो है उस तरह से मार्क्स नहीं ला पा रहा है, तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है और मैं इस पर चाहूँगा कि पूरे समाज को इस तरफ ध्यान दें। अभी प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन उस दिन था परीक्षा पे चर्चा, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि माता पिता जो बहुत दबाव डाल देते हैं छात्र पे, उससे भी छात्रों के अंदर बहुत बड़ा जो है संकट, उनका मानसिक संकट पैदा हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो इस तरह के जो 1000 स्टूडेंट्स का सर्वे किया था इन्होंने, CSDS ने, उनके हिसाब से जो 35,000 छात्राएं, उनकी मुख्य रूप से वजह ये थी कि several factors contributing to this distressing trend, including academic pressure, mental health issues, isolation, financial concerns, lack of support and the stigma surrounding failure in competitive exams. अगर बच्चे को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि अगर आप फेल हो जाते हो तो ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आपका सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इस तरह के जो कोचिंग सेंटर हैं या एजुकेशनल सेंटर हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए भी लोग रखने चाहिए। वहाँ पे मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट के सेंटर भी खोलने चाहिए जो उनको इस तरह की सहायता कर सके। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी, क्योंकि माँ बाप पेट काट के बच्चे को भेजते हैं तो दबाव डालते हैं कि भाई हर हालत में तू क्वालिफाई कर, अगर तुमने क्वालिफाई नहीं करा, कुछ नहीं बना, तो ये जो है हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उस दबाव में बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय है और ये किसी एक के विरुद्ध या किसी एक के उसमें नहीं है। सारे लोगों को मिलकर इस पर सोचना पड़ेगा। जो मेरे 5 सुझाव हैं कि इसमें जो है, एक तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज इंस्टीट्यूट्स में क्रिएट करनी चाहिए, मैंडेटरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, टीचर और स्टाफ को इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कैसे ऐसे छात्रों को उत्साहवर्धन करें, उन्हें निराशा के दौर से निकालें। और इसके बाद जो है फर्स्ट एड का भी इंतजाम होना चाहिए। जो इस तरह के मेडिकल सेंटर जो ये हैं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करने चाहिए गवर्नमेंट को भी और तमाम NGOs को भी। और जो स्टिग्मा है ये कि हम फेल हो गए तो सब खत्म हो गया, इसको दूर करने का प्रयास करने चाहिए। मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि इस पे जो है एक पूरा अवेयरनेस जन जागरण अभियान चलाएं पूरे देश में, ताकि छात्र इस तरह का काम न करें। निर्मला जी ने वो बात कही थी, वो बात वॉकआउट, सर हमारा वॉकआउट जो है ना झारखंड पे है, झारखंड पे वॉकआउट है। माननीय श्री नवाम रेबिया जी, माननीय श्री नवाम रेबिया, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नवाम रेबिया जी, creation of separate all India service cadres of IAS, IPS and IFS for Arunachal Pradesh। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति जी। ये बहुत ही मेरा राज्य अरुणाचल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसलिए इस विषय को पहले भी सदन में रह चुका हूँ। देखिए, अरुणाचल भौगोलिक दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अब तक वहाँ अपना कादर, सेपरेट कादर ऑल इंडिया ऑफिसर्स नहीं है, लाइक IAS, IPS एंड IFS। क्योंकि जब तक अपना ये ऑफिसर आते हैं 2 साल 3 साल बैठ के चले जाते हैं, तो हमारा जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को हैम्पर करता है। इसीलिए ये मांग जो है अरुणाचल सरकार ने भी कई बार यहाँ केंद्र में रखा है और अरुणाचल विधानसभा में भी बहुत बार रेजोल्यूशन पास हुआ है। मैं चाहूँगा कि अगर अरुणाचल का डेवलपमेंट होना है और अरुणाचल के भलाई के लिए काम करना है, कम से कम ऑफिसर 5-10 साल बैठे तभी काम होगा। 2-3 साल में क्या काम करेंगे? इसलिए केंद्र सरकार से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि अरुणाचल के लिए सेपरेट कैडर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज IAS, IPS, IFS मीन्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो सेपरेशन जो जल्दी किया जाए। थैंक यू। धन्यवाद माननीय नवाम रेबिया जी। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी, डिमांड फॉर अमेंडमेंट्स ऑब्लिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू FIR, अरेस्ट एंड बेल। धन्यवाद महोदय। मैं आज सदन में और सरकार के समक्ष एक ऐसा मुद्दा रखना चाहूँगा जो कानूनी है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी बजट स्पीच के दौरान बात कही, जस्टिस फर्स्ट,
और जो देश में नए क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं उसके बारे में भी कहा। लेकिन हमारे देश में जो अंडर ट्रायल्स हैं, जब उनकी हम परिस्थिति देखते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे क्रिमिनल लॉज में एफआईआर, अरेस्ट और बेल के प्रोविजंस में क्लैरिटी ना होने के कारण यह पुलिस प्रशासन के लिए एक कमाई का माध्यम बन गया है। और बहुत सारे केस भी सामने आए हैं जहां माइनर ऑफेंसेस के लिए लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का स्पष्ट उल्लंघन है। हमारे देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन पर है और भ्रष्टाचार की शुरुआत भी यहीं से होती है, और जिसका सबसे साधारण तरीका है एफआईआर की धमकी। कानूनी प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करके पुलिस शोषण करने के लिए और किसी भी कानून के किसी भी सेक्शन को अप्लाई करके लोगों को जेल में डाल देती है। पीएसआई रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 तक 5,70,000 कैदी थे और इसमें 75% यानी कि 4,30,000 अंडर ट्रायल्स हैं। हमारी जेल्स ओवर क्राउडेड हैं और काफ़ी केसेस में युवा, बुजुर्ग, महिलाओं को भी पुलिस गलत एफआईआर करके जेल में डाल देती है। इज ए मैटर ऑफ राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ऐसे भी कई केसेस हैं जहां हमारे माननीय जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज बेल नहीं देते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बेल हो जाती है। इसका कारण है कि जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन इन ग्रांटिंग बेल, जिसमें हर जज अपने विवेक के हिसाब से बेल की कंडीशन निर्धारित करता है। मैं एक इंटरेस्टिंग केस लाना चाहूँगा सदन के सामने। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बेल देते वक्त यह कंडीशन लगाई कि विक्टिम जो मुजरिम है वो 25,000 रुपये का एलईडी टीवी किसी हॉस्पिटल को दान देगा। एक अन्य केस में ये कहा गया कि मुजरिम 2 महीना तक सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेगा। मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ब्रिटिश काल के क्रिमिनल लॉज को रिपील किया और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाए, जिसमें एफआईआर, बेल और अरेस्ट के प्रावधानों में conclude time is over please थोड़ी सी क्लैरिटी दी गई। खत्म। माननीय श्री अब्दुल वहाब, Thank you. Mr. A. Rahim is associating concern over various problems faced by railway passengers in Kerala. Yeah, this one, Kerala, as usual, we are no special zone and all, and we are facing big difficulties, passengers. They are crowded all the railway stations, and hence, Keralites are the most respected and responsible passengers for Indian Railways, less defaulters or non-ticket travelers. 99% Keralites are traveling with tickets. And I request our ministry to go specifically 1 or 2 items. Nilambur is the station where the railway ends, and it is started by British not for the development of Malabar or Kerala. It is developed to get forces to suppress the rebellion sort of against British and take out the teak, Nilambur teak from there to UK. That is why they started. But now, after independence, it is a good, this one, Nilambur, Shornur, and connecting from there to different places. It's happening, and Nilambur is now the Amrud railway station, also Honorable Minister included. Work is going on. The problem is the speed and the electric connection and all. So I request our Minister to look into that one. And the long pending, this one, Batheri, Nanjangud, Nilambur to Bangalore, there is an easy road, so that Keralites can, at least 150 kilometers can be saved. So Nilambur, Nanjangud, this one, projects and all, that is already done PPR, and I wish the next, this one, Minister will be looking at that one. And General Manager of Southern Railway agreed this one AC coaches from Nilambur to Ernakulam, Kottayam. So far not there. Memo trains, it is not there. And it is very difficult for us to travel. So I request our
Government of India through you that immediate action should be taken for Nilambur, Shornur, Cochin and the Kottayam routes. So already we got a Rajarani Express from Nilambur to Kochuveli, but it's very difficult for the cancer patients, those who are going for all 90% cancer patients to Trivandrum, RCC. But the train stops at Kochuveli. And again from there to Trivandrum, these auto rickshaw drivers, taxis, they were filling the people, all 300 rupees, 400 rupees for the 5 kilometers. So I request through you to not extend, to make this Nilambur Rajarani Express to Trivandrum Central. That is our most important this one for. Thank you very much. Thank you, Mani Abdul Wahab ji. Honorable Sri M. Sanmugam need to construct laying overland bridge between Dhanushkoti, Tamil Nadu and Talaimanar in Sri Lanka. Sir, for the last 2 centuries, his name is with efforts associate. are He being is made to associated. provide sea communication Yes. between Sri Lanka and Indian mainland, and many surveys It's and already projects were prepared. Recently also Sedu Samudram Canal project that would connect the Gulf Manor and the Palk Strait was conceived, and all feasibility reports were prepared and dredging work was also started during UPA regime. Unfortunately, the BJP government came to power, it was discontinued and ultimately it was abandoned. Our Honorable Chief Minister of M.K. Stalin last year moved a resolution in the Tamil Nadu State Assembly seeking the revival of the Sedu Samudram project, but the Union government did not give any response. From the Indian coastal corner, Dhanushkodi, Sri Lanka, Talaimanar, it is only 25 kilometers and can be easily connected with a bridge. It will improve the port connectivity and also movement of people. Dr. A. Ramaswamy Molliar committee, which was engaged by the Union government in 1955, examined the desirability of the project and found the project feasible and viable. However, it strongly recommended an overland passage instead of channel cutting through the sea. I would therefore urge upon Union government, especially the Honorable Minister for External Affairs and Minister for Road Transport, to consider laying overland bridge or undersea bridge between Dhanushkodi and Talaimanar to improve the economic and trade relation and people movement between India and Sri Lanka at the earliest. Thank you, sir. Thank you. Manya Srimati Priyanka Chaturvedi ji need to include HPV vaccines in the Universal Immunization Program, UIP. Sir, thank you so much for this time, for this important topic to be discussed. पर सर उससे पहले मैं 30 सेकंड लेना चाहूँगी जो आज सवेरे चेयरमैन की तरफ से रूलिंग आई कि अगर लोकसभा में कोई कुछ कमेंट करता है you are speaking on the subject. No, this is not going on record. अगर आप subject पे नहीं बोलेंगे, I will proceed further. Please listen to me. I am not allowing. The chair is not allowing. It has nothing to do with the allegations, sir. You have to speak on the subject. It has nothing to do with the allegations, sir. Priyanka ji, you have to speak on the subject. Otherwise, I am calling other person. Sri Kiran Rajesh Kumar. Time is over. Question now. Sri Kiran. Time is over. Question now. Honorable Chairman, sir, today I rise to bring to our notice. Question or nothing is going on record, madam. Question or Honorable Sri Deepak Prakash ji, Mani Sri Deepak Prakash, question. Mani Mantri ji. Agriculture and Farmers Welfare. उत्तर सभा पटल. Mani Sri Arjun Munda ji, please. उत्तर सभा पटल. पहला सप्लीमेंट्री। सर, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्रालय को अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में लगातार, हाँ मेरा प्रश्न है सर। आप सवाल पूछे। हाँ सवाल है सर। सवाल है कि केंद्र सरकार ने झारखंड में ऐसी कृषि भूमि जिस पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है कि प्रतिशतता के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है क्या? क्योंकि झारखंड में मुख्य रूप से धान की पैदावार की जाती है जिसके लिए यहाँ पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय जी, जैसा कि झारखंड और पूरे देश की हमारे प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं कि उसके सिंचाई के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2016 के अंदर एक स्कीम बनाई गई जिसके अंदर
3 मंत्रालय जिसमें कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा योजना बनाकर काम प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई और उस योजना के माध्यम से मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगातार उसके अंदर काम हुआ और अलग अलग मंत्रालय ने, जैसा कि कृषि मंत्रालय के अंदर पर ड्रॉप मोर क्रॉप पे काम किया गया और हर खेत में पानी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा और AIBP योजना के तहत जल शक्ति मंत्रालय और वाटरशेड के द्वारा इस पर काम किया गया और उसी का परिणाम रहा कि पूरे देश के अंदर लगातार ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्रफल भी बढ़ा है और जिसमें जहाँ इरिगेटेड अगर खेती की बात करते हैं तो लगभग 77.9 मिलियन हेक्टर एरिया जो है इसके अंदर कवर किया गया है और झारखंड के अंदर भी इसके अंदर लगातार क्षेत्रफल जो है क्षेत्र बढ़ा है और मुझे लगता है कि इसके अंदर झारखंड के अंदर भी आने वाले समय में जो कि अभी 1.43 लाख हेक्टर है जो बढ़कर 2,37,000 हेक्टर हो जाएगा और इस पे ऊपर सरकार के लगातार प्रयास है। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय दीपक प्रकाश जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित मंत्री जी। झारखंड को 2015 और 16 और 2018-19 में NDRF से सहायता दी गई थी। उसके बाद राज्य को सहायता क्यों नहीं मिली है, जबकि राज्य में कई जिले सूखे से प्रभावित हैं और जिसके चलते झारखंड आज परेशान दिख रहा है। जी, जब भी अगर कोई सूखा पड़ता है या किसान के आपदा आती है तो उस समय SDRF फंड का प्रावधान किया हुआ है और सरकार प्रत्येक साल के प्रारंभ में हर स्टेट को स्टेट डिजास्टर फंड के तौर पर उनको फंड उपलब्ध करवाती है और इसी प्रकार से जब उनके वो फंड पूरा हो जाता है उसके बाद में अगर और आवश्यकता होती है तो नेशनल डिजास्टर फंड की स्टेट डिमांड करता है और उसके आधार पर नेशनल डिजास्टर फंड के तहत उनको फंड उपलब्ध करवाया जाता है ताकि किसान को उसकी राहत मिल सके। और मैं आपको इसमें कहना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर भी जैसा कि नेशनल वहाँ से प्रदेश के द्वारा समय समय पर स्टेट डिजास्टर फंड दिया गया और नेशनल डिजास्टर फंड के तौर पर उन्होंने अभी तक हमारे से कोई डिमांड नहीं की और उसकी वजह से, क्योंकि मुझे ये भी बताना है कि जब 2016 के अंदर 15-16 के अंदर नेशनल डिजास्टर फंड के तौर पर 273 लाख करोड़ रुपए जो थे वह अभी बढ़कर जहां मुझे देखना है कि 637 लाख करोड़ रुपए हो चुके हैं। तो ये भारत सरकार की ओर से लगातार स्टेट डिजास्टर फंड लगातार झारखंड के अंदर भी बढ़ाया गया है, लेकिन राज्य सरकार से हमारे पास में झारखंड से कोई ऐसा प्रपोजल अभी प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें उनको नेशनल डिजास्टर फंड की आवश्यकता हो और स्टेट डिजास्टर फंड की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को अगर फॉलो करते हैं, जैसा कि उनकी आवश्यकता के मापदंडों को अगर पूरा करते हैं तो उनको तुरंत ही स्टेट डिजास्टर फंड उपलब्ध करवा दिया जाता है। झारखंड की सरकार ने जो बीच में नहीं आया तो उसके जो उनके मापदंड पूरे होने चाहिए थे वो मापदंड पूरे नहीं किए, उसकी वजह से ये स्थिति। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 2 डॉक्टर CM रमेश। माननीय मंत्री जी। On the table of the House. First supplementary, Dr. CM Ramesh. Sir, I have gone through the statement of the answer. How the PLI scheme has helped improving the tech capabilities, capacity utilization, and competitiveness in the pharma sector, especially in MSME sector. Honorable Deputy Chairman, sir, there are 2 PLI schemes in the pharma sector which have been introduced by the government, and they have 3 different objectives. One is to boost the domestic manufacturing capacity in pharmaceuticals and drugs. Other is to reduce our import dependence. And third is to encourage product diversification in the pharma sector so that our industry can attain a dominant position in the global landscape. The first PLI scheme, which is aimed at boosting the domestic manufacturing for the KSM, the key starting material, the APIs, as well as the drug intermediates. Regarding this scheme, sir, 48 projects for 33 bulk drugs have been approved with a total
committed investment of 3,938.57 crores. Manufacturing of 22 bulk drugs has already been approved, and the production capacity of 89,000 plus million tons has been committed. So the manufacturing capability has been attained. The second PLI scheme has been aimed at, is for the pharmaceuticals, and this is broadly aimed at creating global champions insofar as product diversification is concerned. Here, sir, there have been 55 selected applicants who have made an investment of 25,813 crores against the committed investment of rupees 17,275 crores. And that's been the progress of the two PLI schemes so far. Overall, we have been able to move rightly in the direction of attaining the objectives of these two PLI schemes. Thank you. Second supplementary, Dr. Sim Ramesh. Whether government may like to adopt holistic approach that involves collaboration between industry stakeholders, government and regulatory bodies, which can enhance our position as global leader in pharma sector. Manya Mantri. So any kind of cooperation between Government of India, pharma industries or the other statutory government regulatory bodies goes to foster more and more of regulatory compliance and convergences. In this regard, sir, the CDSCO, along with it coordinates the activities of the state drug control organizations and provides expert advices through statutory bodies like the Drugs Consultative Committee, along with the Drugs Technical Advisory Board. The Drugs Technical Advisory Board is also a multi-stakeholder body which includes experts from the pharmaceutical industry. Moreover, sir, a two-day Chintan Shivir was organized last year in the month of February on drugs, quality regulation and enforcement. This was primarily aimed at reviewing the implementation and processes of the policies and programs. And in this event, state government regulators, the representatives from the state governments, from the industry, they deliberated at large on the transparency and compliance to the Indian drug standards, the regulatory capacities across states and center, the global best practices, also the introduction of newer interventions like digital tools, clinical trial standards, etc., to create a multi-stakeholder approach for the benefit of the common citizens. Thank you. Mani Sri Jawahar Sarkar. What actions have been taken to recoup the reputation of Indian pharmaceuticals that went for a 6 in Africa, in Central Asia, after several deaths took place because of exports of faulty medicines, pharmaceutical products? Thank you. Thank you. Record first that the Indian pharmaceutical industry enjoys a very good reputation in the global landscape. India is popularly known as the pharmacy of the world. Yes. Sir, in terms of volume, we are the third largest in the world, and in terms of value, we are the 14th largest, currently valued at $55 billion and aim to reach $130 billion by 2030. So we enjoy a very good reputation, and especially during the COVID-19 pandemic, sir, our industry, despite the nationwide lockdown, was able to maintain a steady supply of COVID vaccines and other COVID-related medicines to more than 100 countries across the world under India's very, very unique Vaccine Maitri initiative. Our exports have also been consistently growing, sir, in the past 1 decade. However, I would agree with the honorable members that even if there are some few isolated cases of substandard products, then we need to take some proactive measures, and that Government of India is committed to. This issue actually pertains to the Ministry of Health, sir, and the Ministry of Health has, along with the CDSCO, they take appropriate measures. They have looked into the specific issues also that they have quoted,
it is under active examination, but broadly, Government of India, the safety and quality of medicines, and I again repeat, brand image of the Indian pharma industry remains consistently growing. Market access initiative through which several export promotion initiatives have been taken for the export of the pharmaceuticals. So my question is whether step scheme. Thank you, sir. Thank you. So we keep reviewing the products which are to be and I will inform the honourable member. Thank you. Mani Kartikeya Sharma ji. Honourable Minister, what is the ministry doing in respect of exploring new markets, especially in the manufacturing? I want to congratulate that you've allowed looking at how is it looking at those opportunities. It is the constant endeavour of our ministry to not just expand our export presence in the existing markets, but also to keep exploring the new emerging markets. And which is why today the Indian pharma industry has its presence in over 200 destinations. We are trying to make use of our market and to the Latin American and Caribbean region, the Asia Pacific region. Right now, we are focusing on certain specific countries under the Latin American region, which is Argentina, Brazil, and Chile, and also in the Africa, in the South Africa, in Nigeria, in Kenya. So we makes efforts to kind of make inroads into the markets which have an untapped potential. And lately, we have concluded two very important free trade agreements, the separate exporters in the pharma industry, to explore these newer markets, and the other FTAs which are, we are negotiating, once concluded. Thank you, sir. Honourable Minister, Mani Mantri ji, Dr. Danve Rao Sahab Dada Rao, honge. First supplementary. Thank you, sir. Thank you for reply. Honourable Chairman, the budget is that the railways have sanctioned an amount of rupees 879 crore in the years of 2009 to 2014 in Tamil Nadu. From 2014 to 2022, and the income generated through passenger and freight traffic and other sources during the last 10 years, since 2014, and the steps to be taken by the government to complete several projects, railway projects in Tamil Nadu pending since 2008. And the list of projects actually... Please be brief in your question. I'll conclude. List of railway projects still pending. I would like to know the exact status of the long pending railway projects, sir. Thank you. Be brief in question. I expect reply also to be brief. रेल परियोजनाएं राज्यवार नहीं जोनवार होती है और तमिलनाडु ये जो राज्य है अध्यक्ष महोदय ये 3 जोन कवर करता है दक्षिण मध्य पश्चिम दक्षिण पश्चिम ये 3 जोन में ये कवर करता है और इस जोन में कवर करते थे जोनवार ये परियोजना चलती है केवल तमिलनाडु के लिए लेकिन तमिलनाडु में जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अध्यक्ष महोदय हो रहा है 2009 से 14 तक वहाँ पर 879 करोड़ प्रति वर्ष बजट दिया है 9 से 14 तक लेकिन अब 23 में 2023-24 में 9 से 14 के 7 पर ज़्यादा मतलब 6080 करोड़ रुपए का बजट अभी तमिलनाडु में दिया है जो 9 से 14 तक 779 था जो आज 6080 करोड़ रुपए का बजट नई 3 परियोजना होती है नई लाइन चल रही है दोहरीकरण 1229 किलोमीटर अभी तमिलनाडु में चल रहा है सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय श्री आर गिरिराजन सेकंड सप्लीमेंट्री Thank you, sir. Sir, under the Amrit Bharat Station scheme, Southern Railway plans to complete the upgradation of 90 railway stations in this year and 15 stations in Chennai region. Sir, there is an urgent need for the 4th terminal in Chennai. There are plenty of vacant lands belonging to railways available around Perambur where the ICF is located. Sir, my question to the Honourable Minister is whether the railways could come forward to utilize the available... माननीय मंत्री जी अध्यक्ष महोदय
रेल विभाग के दृष्टि से तमिलनाडु एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है और लगभग 72 स्टेशन अमृत आईसीएफ फैक्ट्री आज तमिलनाडु में है, जो 90 में खुली थी जब 1000 डिब्बे वहाँ केवल बनते थे, लेकिन 19-20 में हमने वहाँ पर आईसीएफ में 4166 डब्बे बनाए, 23 में हम 2700 बनाए और अभी हमारा लक्ष्य 3241 बनाने का। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जितनी जगह है उतना उस जगह का हम पूरा उपयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। डॉक्टर एम थम्बीदुरई जी, सप्लीमेंट्री। Deputy Chairman, sir, I want to know through Honorable Deputy Chairman, what is the present status of the long pending new railway projects implementing the new railway line between Jolarpet and Bangalore via Krishnagiri and Hosur. Hosur and Krishnagiri is now declared by the central government as defense corridor. Therefore, this line is very, very important. For 35 years, this line discussion going on. I want to know the Honorable Minister, what is the present position of connecting this Krishnagiri Hosur via Bangalore and Jolarpet? That is the thing. Thank you. सभापति महोदय, वहाँ पर 4 परियोजनाएं चल रही है। एक मदुरई बुड़ी नायकपुर, रामेश्वरम धनपुड़ी और तिंडी वनम जिंजी तिरुवन्नामलाई, मोरप्पुर धर्मापुर, ये 4 योजनाएं सभापति महोदय वहाँ चल रही है। लेकिन मदुरई बुनीकुंडूर ये तो कमीशन हो गई है और 98.53 करोड़ की लागत उसको लगी है और जो प्लीज लेट हिम रिप्लाई प्लीज। विद्युतीकरण का कार्य भी कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, रामेश्वर धनुषकोडी ये जो है तमिलनाडु सरकार ने ये परियोजना हटाने के लिए आग्रह किया है। अध्यक्ष महोदय, तिंडिनम निजी माननीय मंत्री जी डॉक्टर एम थम्बीदुरई जी जिस सवाल को करना चाहते हैं वो आप बाद में उन्हें बता सकते हैं अगर उत्तर ना हो तो। थैंक यू। डॉक्टर जॉन ब्रिटास जी, you have a question, please go to your seat. Dr. Fauzia Khan ji, please. Sir, mic is working, it's on. Thank you, sir. सर, मैं मंत्री जी से एक महिला होने के नाते एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब हम रेल प्रवास करते हैं तो टॉयलेट्स की बहुत तकलीफ होती है। इतने गंदे टॉयलेट्स होते हैं ट्रेन्स में और जो मोस्ट मॉडर्न टॉयलेट है वो भी पूरा फुल होकर इस तरह ख़राब हो जाता है सर। तो ये अच्छे साफ सुथरे टॉयलेट्स महिलाओं को खास तौर पे मिले ट्रेन्स में, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? धन्यवाद। माननीय मंत्री। आदरणीय सभापति महोदय, अभी जो रेल में टॉयलेट बिठाए उसका पूरा सरकार कोशिश करती है कि साफ सुथरा रहने का, लेकिन अगर ऐसी कोई शिकायत हमारे पास प्राप्त होती तो मैं उसको देख लूँगा। डॉक्टर जॉन ब्रिटास, प्लीज। डॉक्टर जॉन ब्रिटास। Thank you very much, sir. Sir, the Honorable Minister has spoken about the investment that is being done in Southern Railway. As you would appreciate, Kerala also is part of the Southern Railway. And Vande Bharat trains which are plying in Kerala has the highest occupancy rate in the country. Now it has proven that question, please. There is a demand for a semi-high-speed railway because of the enhanced demand in Vande Bharat. In this context, I would specifically ask the Minister whether he will consider the K-Rail project submitted by the Kerala government with the Railway Ministry. Thank you. माननीय मंत्री। सभापति महोदय, अपने देश में अभी वंदे भारत ट्रेन अभी शुरू हुए और हर जोन में उसकी मांग बढ़ती जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि 39 ट्रेन आज के दिन अपन चला रहे हैं और जैसी जैसी ट्रेन की उपलब्धता होगी वैसे हम दे देंगे। थैंक यू। देयर आर अदर मेथड्स। माननीय सदस्य का जो सवाल है आप पता करके माननीय मंत्री जी बुलाकर उन्हें बता देंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4, माननीय श्री ईराना कराडी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति,
धन्यवाद उपसभापति महोदय। पोस्ट ऑफिस और डाक सेवाओं के संचालन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रामीण डाक सेवकों की होती है। ग्रामीण डाक सेवकों की बहुत वर्ष से मांग है कि उन्हें विभाग द्वारा दिए जा रहे लाभ जैसे अवकाश, HR, TA, DA, पेंशन और स्वास्थ्य सुविधा इत्यादि भी दिया जाए जिसकी सिफारिश 2015 में कमलेश चंद्र समिति द्वारा भी की गई थी। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि सरकार द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों की मांगों पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? माननीय उपसभापति महोदय जी, ग्रामीण डाक सेवक हमारे विभाग के अति महत्व के एम्प्लॉइज़ हैं। हमने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो बेनिफिट मिलता है वो सारे बेनिफिट्स उनको देते हैं। हालांकि वो उनका ड्यूटी आवर्स 4 to 5 आवर्स रहता है और ये 4 to 5 आवर्स में भी करीब 10,000 से लेकर 35,000 तक DA अलाउंस, उनको GDS में जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो बेनिफिट मिलता है वैसे ग्रेजुएटी, ग्रुप इंश्योरेंस, सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट्स, एक तरीके से जो न्यू जो बेनिफिट है राइट नाउ जो हेल्थ के भी, वो सारे बेनिफिट्स हम ग्रामीण डाक सेवक को देते हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री अन्य कडाडी जी। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि वर्तमान में पोस्ट ऑफिस में कितने निष्क्रिय खाते और अदावित राशि है और क्या सरकार इन निष्क्रिय हुए खाते में जमा राशि का प्रयोग ग्रामीण इलाकों में पोस्ट ऑफिस के आधुनिकीकरण हेतु करेगी? धन्यवाद। माननीय उपसभापति, वर्तमान में अनक्लेम अमाउंट जो है वो करीब 25,480 करोड़ के आसपास है। हमने अभी एक स्कीम चलाया है जो अनक्लेम अमाउंट है उसको वेरीफाई करके उसके जो हेरिडिटरी में जो उसके परिवार में जो लोग हैं उनको हम खुद सामने से आइडेंटिफाई करते हैं। और वैसे हमने मार्च 23 और दिसंबर का मैं आपको एक फिगर देता हूँ। अनक्लेम अमाउंट हमने मार्च 23 में 21 लाख अकाउंट में 1,240 के आसपास करोड़ अमाउंट हमने उनको वापस किया है और दिसंबर 2023 में 33.35 अकाउंट में 1,319.67 करोड़ रुपीस की अमाउंट हमने उन अनक्लेम होल्डर्स हैं जो अकाउंट होल्डर हैं उनका वेरिफिकेशन करने के बाद उनको हमने वापस उन परिवार को दिया है। थैंक यू। माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। पूरे देश में पोस्ट ऑफिस में लगभग 7.5 करोड़ अकाउंट्स हैं। इन 7.5 करोड़ अकाउंट्स में कितनी राशि जमा है? महोदय, हमारे यहाँ टोटल 1,64,000 से अधिक पोस्ट ऑफिस में जो हमारे कुल अकाउंट है उस अकाउंट में अभी तक अलग अलग स्कीम्स में, चाहे वो IPPP के अकाउंट है उसमें 8 करोड़ से अधिक अकाउंट है और उनमें मुझे कहते हुए गर्व महसूस होता है कि 47% ऑफ IPPP वो वुमन के अकाउंट का है। मैं केवल आपको IPPP का बताऊं, 30,381, ये केवल IPPP अकाउंट की बात कर रहा हूँ। और जो पोस्टल जो अकाउंट है उनमें से हमने 1.43 लाख करोड़ अमाउंट डिपॉजिट है। थैंक यू। माननीय सुजीत कुमार जी। Today, post officers in our country are providing not just postal services, but also many additional services like passport seva, banking facilities, and other citizen-centric services. Sir, I would like to know from the Honorable Minister whether there has been any impact assessment study
done to measure the economic impact, particularly economic impact of these new services in the post offices and the adjoining areas in rural India? माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय जी, आज पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क अगर कहीं है तो वो भारत में। आज हमारे देश में रूरल में 1,49,000 से अधिक पोस्ट ऑफिस रूरल में है और करीब 15,000 से अधिक अर्बन में है। ये पोस्टल नेटवर्क जो है वो सबसे ट्रस्टवर्दी नेटवर्क है। आज पहले ये केवल डाकिया डाक लाने का काम करता था, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में ये डाकिया अभी डिजिटल डाकिया हो गया है। ये डाकिया केवल मेल और पार्सल नहीं देता है, लेकिन आज वो बैंकिंग सर्विस देता है, इंश्योरेंस सर्विस देता है। हर सिटीजन्स के लिए जो बेनिफिशरीज है उनका जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन का जो ट्रांजैक्शन होता है वो सारा रूरल में, चाहे वो वुमन का हो, चाहे एग्रीकल्चर के लिए किसान का हो, या कोई भी भारत सरकार की सोशल सर्विस की स्कीम हो, वो सारा ट्रांजैक्शन रूरल एंड पे, डोर स्टेप पे अगर कोई चेहरा अगर भारत सरकार का सर्विस देता है तो हमारा पोस्टल विभाग देता है। आज पोस्टल विभाग ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वो सारी सर्विस देते हैं। थैंक यू। श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, प्लीज। सीमा द्विवेदी जी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को कि संचार प्रणालियों के कार्यान्वयन में, डाकघरों की स्थापना में ग्रामीणों की संख्या में अच्छा इजाफा हुआ है और इसका ग्रामीणों को लाभ भी मिलता है। सवाल क्या है? महोदय, मैं आपकी अनुमति से जानना चाहती हूँ कि देश का बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण डाकघरों की संख्या है 16,055। तो महोदय, मैं आपकी अनुमति से जानना चाहती हूँ कि क्या ग्रामीणों की सुविधा बढ़ाने के लिए इन डाकघरों की स्थापना को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी? हाल ही में हमारी सरकार ने ब्रिक एंड मोटर्स के बेस पे हर एवरी 5 किलोमीटर्स में, और जैसे हिल उनमें हमारे नॉर्म्स में रिलैक्स देने के बाद एवरी सिटीजन्स को हमने टच करने के लिए हमने एवरी 3 किलोमीटर्स पे नया पोस्ट ऑफिस खुला है। अगर उत्तर प्रदेश में भी आवश्यकता होगी तो हम खोल रहे हैं। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले की कांग्रेस की सरकार के समय में करीब 634 पोस्ट ऑफिस बंद हो गया था। अभी हमने 5,746 नए पोस्ट ऑफिस खोले हैं और 5,000 खोल रहे हैं। 10,000 से पोस्ट ऑफिस नया खोलने के बाद अगर उत्तर प्रदेश में भी कहीं पोस्ट ऑफिस की आवश्यकता होगी तो हम जरूर खोलेंगे। हम हर सिटीजन तक पहुंचना चाहते हैं, और ट्रेडिशनली बैंक जहां नहीं जाता है क्योंकि वो अनसस्टेनेबिलिटी कारण नहीं जाता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस बैंकिंग सर्विस देने के लिए तैयार है। अनबैंक एरिया जो भी है वो सारे अनबैंक एरिया को हम कवर करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5, माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक जी। माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 5, पहला सप्लीमेंट्री, माननीय नदीमुल हक जी। ask whether it is a fact that between 2017 and 2021, 217 consequential accidents and 1,800 other accidents took place, and that derailments were the cause of majority of the accidents. If so, the details and the actions taken thereof. Thank you. माननीय मंत्री जी। महोदय, पिछले 3 वर्षों के दौरान जो रेल दुर्घटना हुई, भारतीय रेलवे विभाग निरंतर रेल दुर्घटना कम करने की कोशिश करती है। 22-23 अध्यक्ष महोदय 105 रेल दुर्घटना हुई, और रेल दुर्घटना होने का एक कारण नहीं होता है। रेलवे ट्रैक में खराबी, रेल इंजन में खराबी, इक्विपमेंट में खराबी, ये दुर्घटना के कारण होते हैं।
और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोहरा होता है उसी समय भी दुर्घटना होना संभव होता है। तो अभी जो उन्होंने साहब ने आंकड़े बताए, लेकिन 2001, 2002 और 2004 लगभग अध्यक्ष महोदय 473, 2002 में 415 से लेकर तो 2012 में 131, 13 में 122, लेकिन आज की तारीख में 2016-17 में 104, 17-18 में 73, 18-19 में 59 और 19-20 में केवल 55 एक्सीडेंट हुए हैं, 21-22 में 35 और 22-23 में 48। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, last year the railway spent 1,05,378 crores on its budget. So 65,000 from government's budgetary support and 40,000 crores from internal revenues. So my question is, how much has been spent on this warning system, that is the Kavach system? Thank you. And how much on the track upgradation? Thank you. माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, कवच एक स्वदेशी नई टेक्नोलॉजी है और आज के तारीख में 1465 किलोमीटर दक्षिण मध्य रेल पर कवच लग चुका है। लगभग 3000 किलोमीटर जो अभी दिया है वो दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा मार्ग पर उसका काम चल रहा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना, दूरसंचार टावरों की स्थापना करना, स्टेशनों पर उपकरणों का प्रावधान करना, लोकों में उपकरणों का प्रावधान और ट्रैक साइड उपकरणों की स्थापना, ये अभी काम अध्यक्ष महोदय चल रहा है। माननीय राकेश सिन्हा जी। माननीय राकेश सिन्हा जी प्लीज। सभापति महोदय धन्यवाद। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलेट्स के बारे में, श्री अन्न के बारे में यूनाइटेड नेशन में रखा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्वीकृति मिली और मिलेट्स का उत्पादन और उपभोग दोनों बढ़ा है, मैं माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या रेलवे प्लेटफॉर्म पर जंक फूड को विस्थापित करके मिलेट्स यानी श्री अन्न को प्रमोट करने की कोई कार्यक्रम रेल मंत्रालय के पास है? और रेल में भी जो भोजन दिया जा रहा है उसमें मिलेट्स को देने का प्रावधान कर रहे हैं क्या? धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने मिलेट के लिए प्रोत्साहन दिया है और माननीय सदस्य की जो सूचना है मैं उनसे मिलकर इसके बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद। माननीय निरंजन वीसी जी। Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. Sir, coach washing plant at Kontabanji and railway under bridge has been sanctioned by East Coast Railway since last 2 years, but the work has not been started. So I would like to know from Honorable Minister when the work will be started. माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, ये कवच के बारे में पूछा गया प्रश्न है। अगर माननीय सदस्य को अगर इसके बारे में जानकारी तो मैं समय दूंगा और चर्चा करूंगा। थैंक यू। ऑनरेबल ए रहीम, योर क्वेश्चन। Sir, every life is very precious. Sir, in the past years, many lives have been lost on the track. Sir, including trackmen and track women. Sir, 361 workers died on railway tracks in last 5 years. Sir, my question, in how many railway divisions has red check device been fully implemented? Red check device. Thank you. सभापति महोदय, कि ये जो मृत्यु होती है, सभापति महोदय मैंने तो आंकड़े आपको बता दिए हैं, लेकिन जो कर्मचारी है उनके जो मृत्यु हुई आज के तारीख में आंकड़े मेरे पास नहीं, मैं सभा पटल पर रखता हूँ। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज, ही विल कीप क्वेश्चन। माननीय मंत्री अमर पटनायक। Sir, greenhouse emissions are at the core of the discourse on adverse climate effects. The reply, the ministry has said that they are not monitoring industry-wise or even industry company-wise is also here. Please question, Doctor. The question is, the suggestion, which is by way of question,
that you could have a portal, just like the Minister of Corporate Affairs has a CSR portal, where companies upload whatever is the greenhouse emissions made by them, which is available to public and other industry competitors, so that a fair amount of environment ecosystem is developed for controlling greenhouse emissions company-wise, because that is what is ultimately going to matter. Honorable Minister. Because making such data in the public domain could also harm the interests of India's export competitiveness, our export performance. And therefore, individual company-wise data is not something that the government would like to interfere in. However, this is one government which has always been very conscious of our global responsibility, has been a part of the solution across the world ever since the Paris Agreement in 2015 at COP21. India, led by Prime Minister Shri Narendra Modi, has been at the forefront of forging consensus and ensuring that the world wakes up to this climate crisis. We are, in fact, very proud that India as a nation is one of the few countries which regularly submits our biannual UNFCCC report about our performance against the nationally determined contributions of 2015. We are the best performing country amongst all the G20 countries when they were ranked by an independent agency, and therefore the government is focusing its attentions at the macro level, whereas industry suo moto on their own, thanks to the consciousness that has been generated in the country, are looking at their own processes, looking at improving their own processes, looking at playing an important positive role in addressing this problem of climate change. Dr. Amar Patnaik, second supplementary. Sir, may I suggest to the Honorable Minister that in the reply they have mentioned that the India's Carbon Credit Trading Scheme 2023 has been put in operation. It cannot be put under operation unless you have industry in every separate company-wise the data of greenhouse emissions and carbon emissions. However, the second supplementary is whether a decarbonization pathway has been prescribed for each industry, each company by way of notification, and that is being reviewed so that we achieve the targets which you mentioned of the Honorable Prime Minister to make net zero by 2070 or even earlier. Honorable Minister. Well, Chairman, as regards the carbon credit trading system, the scheme will be, benefit will be taken by those who prepare that data and who are able to demonstrate that they are eligible for the carbon credits. In a way, it's the government's efforts to encourage more and more companies to come within the ambit of the scheme, to take benefit of this trading scheme. And therefore, we believe that the persuasive approach and a more consensus and taking people together, industry together, is the right way to achieve these goals. As regards the overall India contribution to greenhouse gas emission reduction or to addressing the challenge of climate change, extensive data is being collected by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change. Extensive research is being done in different sectors on our ability to bring down the carbon emissions, to create a carbon sink, both adaptation and mitigation measures. India is at the forefront of these measures, and I can assure the Honourable Member through you, sir, that India will relentlessly pursue the path both of inclusive growth and sustainable growth. Dr. Ami Yaznik, third supplementary. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Sir, I have seen the reply given by the Honorable Minister, and it's very clearly said that there is no database which has been formed for the cement industry. So there is no greenhouse gas emissions database which you have. You do not have a special budget also for this particular industry which is carved out for treating the greenhouse gas emissions. Given this situation, you talk about inclusive and exclusive and sustainable growth. You have committed net zero emissions at the international level, but you do not have a roadmap or a budget or a plan, either shorter
or a longer for the cement industry, which is one of the largest sectors and which contributes to the construction industry as well. So when you do not have this, how would you go for emission trading, carbon credit trading, without having anything or a roadmap in place? So all these hollow statements do not give concrete examples of how you are going to bring zero net emissions at the international level. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, I think the same question was agitated by the earlier speaker, but I would like to repeat. It was more force this time. Yeah, I would like to inform the honorable member through you, sir, that what we have written is, the question was regarding current greenhouse gas emissions from the cement industry, broken down by individual companies, production unit-wise. So our reply relates to the question that we don't have every production unit's data for every industry running the cement plants. The country is collecting data for different sectors which are recognized as contributing to the greenhouse gas emissions at the aggregate level. Industry bodies are working in consultation and collaboration with the government to address these issues. Cement industry is a very, very important sector of the economy. They are on suo moto, recognizing the global problem and are taking necessary steps for mitigation of the greenhouse gas emissions. I think Indian industry today, and I'm proud to say this on behalf of Indian industry as the industry minister, the industry in India today is self-reliant. The industry in India is Atmanirbhar. They are not looking for clutches for everything that has to be done. They don't look at the government for every small thing. They are not looking at government subsidies and only after that they will act in the interests of the country or the nation. So I think the important thing to be noted is that industry is conscious of their obligations. As regards the carbon trading scheme, the Bureau of Energy Efficiency is already, as per the scheme, if you will care to go into the scheme, undertaking studies for the sectors which are obligated to be covered under the scheme, and accordingly they will work out the targets, they will work out what the incentives or what the credit should be given to each industry for improvement. Those targets in due course after the study will be notified by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, and it is only after that that they will be able to start giving the carbon credits. The scheme has been notified, the trading process has been brought to fore, the actioning of the scheme is under process. Thank you. Trading, it was already there in place. It's not a new thing. And Gujarat had one of the industries which is topping the list in fluorochlorocarbons. So it is not a new thing. You already have a roadmap. So how are you going to implement it? That is the question. Honorable member, I didn't hear you. What did you say? Gujaratis? Which is already dealing in this emission trading. So it was already there, put by the UPA years, during the UPA years. So there is already a roadmap. You just have to follow it. But I think you are perplexed and puzzled how to go about it. I'd like to, sir, I'd like to... She's appreciating you. I would like to thank the honorable member for having highlighted how the Prime Minister, when he was the Chief Minister of Gujarat, was at the forefront of the fight against climate change. In fact, Honorable Chairman, sir, the important point to be noted is when the world was waking up to the challenge of climate change, Vice President of one of the global superpowers, the world's largest economy, came out with a book called Inconvenient Truth. But Honorable Prime Minister, in response to that, said, as the Chief Minister of Gujarat, that for us in India, we knew this inconvenient truth for generations and centuries, because India consciously respects nature, respects every aspect of nature. He came out with initiatives. Honorable Minister. First supplementary, Shri Anil Desai.
Mike. Yeah. Sir, thank you, Chairman, sir. Honorable Agriculture Minister has given a very elaborate, in fact, I'd asked specific questions, but going beyond the scope of the questions, the answer is very elaborate. I'm going by the answer which has been given, and in the answer, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has been emphasized. During the year 22-23, 1175 lakh farmers' applications were enrolled, and the funds allocated in the sense it is taken that claims which were paid were to the tune of 15,500 crores. So if we go by, because in PM FBI, which was introduced in 2016, it needed improvement every year because the farmers' woes on the ground were never heard. And if we go by the answer itself, that 15,500 crores came by way of claims to the farmers, and average farmer gets around 1,320 rupees on an average per farmer. And the farmer who pays by way of his paying the premium, that comes to 2% of the Kharif and 1.5% for the Rabi, that comes to, on an average, more than 5,000 rupees is paid by the farmer. And this itself shows, the government answer itself shows that PM FBI, which very much emphasis is made, and with pride the government has been saying that over the years this is very beneficial to the farmers, which is not the fact. Because on the ground, farmers are crying. You can very much verify the facts from the insurance companies itself, from the government department itself, and more than anything from the farmer. May Your supplementary. May I know from the Honorable Minister what improvements are being done or have already been done, which will really, this Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana will be a beneficial instrument in the hands of government to give the benefits to the farmers. Honorable Minister. सभापति जी, भारत का फसल बीमा योजना 2016 में शुरू है नया पॉलिसी के तहत, and this is the first largest crop insurance scheme in the world in terms of farmers registration. And also, sir, this is the third largest scheme in the world in terms of insurance premiums. Like हमारे देश में 7 साल में 49.44 करोड़ किसान एप्लीकेशन एनरोल किया है सर, एंड अभी इस साल में 14.06 करोड़ एप्लीकेशन आया है, एंड इसी में प्रीमियम बढ़ा है 7 साल में 29,183 करोड़ रुपए प्रीमियम किसानों ने भरा है सर. क्लेम्स रिसीव्ड 1,46,664 करोड़ रुपया, लाइक बहुत ज़्यादा गुना बढ़ा है प्रीमियम मिलने में. हर साल हम किसान 100 रुपीस भरा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट को मदद देते हैं सर. ये तो पूरा का पूरा स्टेट इसके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, एंड भारत सरकार अपने हमारे इससे स्टेट को देते हैं, एंड स्टेट टेंडर बुलाते हैं, स्टेट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, भारत का हिस्सा उसको मिलता है. एंड हम अभी किसानों को 100 रुपये पे किया तो अभी तक 502 रुपया किसानों को मिला है सर अभी तक. इसीलिए वो 29,000 करोड़ के लिए 1,46,000 किसान का हिस्सा दे गॉट द क्लेम्स इन किसान सम्मान फसल बीमा योजना में. सभापति जी, हम इसको नया फसल बीमा योजना का नीति लाए हैं. इसी में हम 33 से अधिक नुकसान किसको होता है उसको वो क्लेम देने का ऐसे हम नया पॉलिसी बनाया है. टेंडर प्रक्रिया को 3 साल को हम बढ़ाया है. ऐसे ही स्वेच्छा से कौन खुद करना चाहते हैं, इसी में कंपलसरी नहीं है, कौन भरना चाहते हैं फसल बीमा को
वो बढ़ा सकते हैं, स्वैच्छिक है इसी में। इसीलिए टेक्नोलॉजी को हम अपनाए हैं सर, डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाए हैं, सॉफ्टवेयर को हम किया है। इसके कारण स्टेट क्या करना चाहते हैं उसके हिसाब से वो कर सकते हैं। भारत सरकार अपना हिस्सा हम देते हैं सर। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री अनिल देसाई। Sir, for my first supplementary, I would request the Honorable Minister to go by the answer and please answer correctly, because the answer which is given by is completely wrong, and what the explanation was given by the Honorable Minister doesn't satisfy me or my expectations, because I have different figures with me. Anyway, my second supplementary, sir, may I know from the Honorable Minister that the figures which were asked in my question regarding the pulses, that 21-22, that demand which was projected in pulses was 267, whereas the production was 273. And the imports at the same time, which is shown on the earlier page, that it goes up to 2699 imports of pulses. May I know from the Honorable Minister through you, sir, that why this anomaly or why this mistake is taken, whether it is a mistake in the answer, or when the production is higher than the demand, where is the question of importing the pulses in that very year? Yes. So how do you justify that during 21-22, when the pulses production was much higher than the demand at that time from the domestic demand in the country, what was the need to go for the import of the pulses? Honorable Minister. सर, हमारा देश में तिलहन और दलहन में थोड़ा सा कमियां है सर, इसीलिए हम बाहर देश से तिलहन और दलहन का इंपोर्ट करना पड़ता है। तिलहन और दलहन को बढ़ाने के लिए, भारत आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रहे हैं सर, उसको मदद भी दे रहे हैं। इसलिए हम एरिया बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी एंड उत्पादन एंड उत्पादकता दोनों बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। दलहन में थोड़ा सा कम हर साल हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तूर ज़्यादा उगाने वाले स्टेट है सर, कर्नाटका, महाराष्ट्र। इधर तूर का था, ये दलहन का था। दलहन का सवाल पूछे हैं। प्लीज प्लीज, आपका क्या समस्या है? यस ऑनरेबल मिनिस्टर। इसीलिए दलहन और तिलहन को हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए हम दलहन का हब बनाए सर, 250 हब्स बनाए हैं, एंड नया वेराइटीज को हम अनुसंधान कर रहे हैं। क्लाइमेट रेसिलिएंट वेराइटीज को हम अनुसंधान कर रहे हैं, हमारा ICR रिसर्च कर रहे हैं, एंड ऐसे डोमेस्टिक MS को हम बढ़ाया है सर। MS से हम खरीदते, प्रोक्योरमेंट करते हैं, क्योंकि MSP देने से किसानों को लगता है हम क्या उगाते हैं उसको लेते हैं, सरकार लेते हैं बोल के, इसीलिए उसको हम ज़्यादा कर रहे हैं। एंड इसके कारण हम दलहन को ज़्यादा बढ़ावा देने का काम, एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन बढ़ाने का काम कर रहे हैं सर। एंड तूर में थोड़ा सा कमियां है, क्योंकि कर्नाटका, महाराष्ट्र में ज़्यादा उगाते हैं तूर दाल, उधर सूखा पड़ा है सर। सूखे के कारण दलहन के तूर में कम हो गए सर। इसको हम इंपोर्ट करने से पूरा देश को ठीक करने को सोच कर रहे हैं सर। सप्लीमेंट्री नंबर 3 श्री अशोक कुमार मित्तल। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि किसानों को दी जाने वाली मिनिमम सपोर्ट प्राइस दुगनी कर दी गई है, जो कि सराहनीय है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है, क्या भारत सरकार MSP को कानूनी गारंटी देने के लिए कोई कानून लाने के बारे में विचार कर रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर।
अधिक होती है, कुछ में कम होती है, कई किस्मों में से, जिसमें तूर दाल के बारे में कहा गया। पिछले बार कर्नाटका में सबके जानकारी में है कि वहाँ अच्छी फसल नहीं हो पाई सूखा के कारण, और जो तूर दाल होती है उसके उत्पादन के लिए समय बहुत अधिक लगता है। चना दाल का जो उत्पादन है वो अधिक है। कुल जो दाल उत्पादन देश में हुई है उसके अनुसार सरप्लस है, लेकिन जो आवश्यकता है तूर दाल की उसमें कमी आई। तो दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी की गारंटी है एमएसपी के बारे में, किसानों का आय दुगुना हो, उसको सही लागत और उसका लाभ अच्छे ढंग से मिले, ये अपने आप में मोदी जी की गारंटी है। Question hour over. Honorable member Kavita Patidar to move that an address be presented to the President in the following terms: that the members of the Rajya Sabha assembled in this session are deeply grateful to the President for the address which she has been pleased to deliver to both houses of Parliament assembled together on January 31, 2024. माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने 31 जनवरी 2024 को संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में जो अभिभाषण दिया, उसके लिए राज्यसभा के सदस्य जो सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित है, माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सभापति महोदय, अमृतकाल की शुरुआत में बने नए संसद भवन में अपने जीवन को कर्म से गढ़ने वाली नारी शक्ति की परिचायिका आदरणीय राष्ट्रपति जी ने 500 साल के इंतजार के बाद बने भव्य अयोध्या मंदिर एवं राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के मनोभाव के साथ ही राम राज्य की स्थापना की ओर कदम उठाते हुए विकसित भारत के संकल्प के साथ हमारी सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखा है। संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक नए भवन की भव्यता को तो उन्होंने दर्शाया ही है, साथ में विश्वास भी जताया है कि विकसित भारत के विकास को आकार देने वाली नीति के रचनात्मक संवाद इस नई बिल्डिंग के गवाह बनेंगे। माननीय सभापति महोदय, जैसा हम जानते हैं कि हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं की सशक्तिकरण में उठाए गए कदम हर स्तर पर संभव प्रयास करे हैं। उद्यमिता, सुगम जीवन, महिलाओं के लिए सम्मान के माध्यम से उनके सशक्तिकरण को इन 10 वर्षों में जो गति मिली है वो हम सब के सामने है। यत्र न्यायस्ते पूजते रमन्ते तत्र देवता, इस मूल मंत्र पर केंद्रित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक एजेंडा भी निर्धारित किया और उसको वास्तविकता का स्वरूप भी प्रदान किया। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की तकदीर संवारने का काम किया। फिर वह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 3 करोड़ से अधिक बहनों के पोषण का चिंता का विषय हो, या फिर बहनों के सम्मान से जुड़ा 11 करोड़ से अधिक शौचालय निर्माण कर बुनियादी जरूरत को पूरा करने का प्रण हो। आज हमारी सरकार ने हर उस माता की चिंता समझी जिनकी आंखों की रोशनी घर की रसोई में चूल्हा जलाते हुए धूमिल हो गई। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को उस धुएं से आज़ादी मिली जिसने उनकी सांसों को दमा जैसी बीमारियों से जकड़ रखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से करोड़ों बहनों ने बैंक की दहलीज तब लांघी जब उनके जनधन खाते खोले गए। महिलाओं के आज हमारी सरकार के द्वारा 27 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं। आज हमारी सरकार ने जल, थल, नभ और अंतरिक्ष हर तरफ बेटियों की भूमिका का विस्तार किया है। हमारी बेटियों के सामर्थ्य की झलक दिखाती गणतंत्र दिवस की परेड भी
नारी शक्ति को समर्पित की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारिता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए। उसी का परिणाम है कि आज लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी है, जिन्हें 8 लाख करोड़ रुपए बैंक लोन और 40,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। 1 second. Yes, Digvijay Singh ji. The amendments to 1 the second. Digvijay Singh ji, amendments. you are raising a point of order under which rule? Sir, 258. So the 258. the point of order is. Let's read 258, sir. The point of order is. Sir, 258 The first. procedure here is that Sir, once the. Would you kindly look at 258? 238. 1 second. Make up your mind. 238 or 258? 258. Sir, you will have to decide under which rule you are raising it. Sir, the point is of procedure when the amendment is to be moved. No, sir. Sir, usually. Sir, under which rule? So that I may also have the benefit of it. Sir, 258. Any member may at any time submit a point of order for the decision of the chairman, but in doing so shall confine himself to the stating a point. 258. Sir, 258 doesn't, I have given no decision. I'll read it. 258 says, points of order and decisions thereon. Yes. Any member may, at any time, submit a point of order for the decision of the chairman. Yes. But in doing so, shall confine himself to stating the point. Yes. Very sweeping, sir. So the point is simple. The amendments are moved after the mover has moved the motion and seconded by the seconder, and then the amendments. After that, the speech will start. That is the procedure, sir. That has been a procedure, sir. Can you indicate this procedure in the rules? Sir, procedure, rules are, sir, rules. Can you? Sir, it is not, it is the procedure. This has been done over the precedences. So this is for the first time, she has started the speech without the amendment being moved. Digvijay Singh, the many things are happening for the first time. Yes, under your chairmanship, sir. Lot of members of parliament have been thrown without any reason. Sir, please don't sort of overdo it. Record Digvijay Singh ji. Sir, I am very mindful of history, and that is why I seek everybody's assistance. Then they confirmed that usually the amendments are moved before her speech starts. There is no such provision of seconding. Take your seat, very experienced members. As a matter of fact, I am going by the listed business. Honorable member may continue her address. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने की महत्वपूर्ण अभियान चला रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत समूह को 15,000 ड्रोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना महिला सम्मान का एक प्रतीक उदाहरण है। सशस्त्र बलों में महिलाओं को पहली बार परमानेंट कमीशन देने का निर्णय हो या सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला कैडेट्स को पहली बार प्रवेश देने की बात हो, हमारी सरकार द्वारा दिए गए अवसर आज हमारी बहनों के विकास और सम्मान के रास्ते खोल रही है। आज महिलाएं फाइटर पायलट भी है और नौसेना के जहाज को भी कमांड कर रही है। चंद्रयान 3 की सफलता में भी भूमिका निभा रही है और कोविड जैसे संकट के समय अपने धैर्य और मनोबल को ऊंचा करते हुए वैक्सीन निर्माण में भी सहभागी बनी है। हमारी सरकार की मुद्रा के तहत करीब 31 करोड़ से ज़्यादा लोन महिलाओं को मिले हैं, जिससे स्वरोजगार शुरू कर बहनें आर्थिक सशक्त बनी है। पहली बार ये देखने में आया है कि भारत के
लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं तक सुधार आज हम देख रहे हैं। माननीय महोदय, ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बनाकर एक तरफ बहनों के सम्मान की रक्षा करने से लेकर इतिहास को बदलते हुए राजनीति के साथ सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम के सफर तक पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं को मालिकाना हक देते हुए 70% से अधिक घर देने के साथ ही नाबालिगों से बलात्कार के लिए मृत्यु दंड और न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 20 साल करने तक ये माननीय प्रधानमंत्री जी के वो संकल्प थे जिनके द्वारा नारी के अधिकारों में वृद्धि कर उनके सम्मान की रक्षा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज जिस प्रदेश से मैं आती हूँ, मध्य प्रदेश, जहाँ माँ नर्मदा और माँ शारदा का आशीर्वाद पग पग पर मिलता है, उस प्रदेश में बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, उनके विवाह और उनको आत्मनिर्भर बनाने तक की सभी योजनाओं के साथ केंद्र की योजना का लाभ लेकर महिला क्रांति का सामाजिक प्रभाव आज हमें देखने को मिल रहा है। घर घर आंगन, आंगन देखो खुशहाली आई है, सबका मान बढ़ाने घर में बेटी आई है। यह सुअवसर मिला है क्योंकि आज बेटियों का जन्म उत्सव बना है। हमारी सरकार ने बहन बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान देकर उसका समाधान किया है। महिला शक्ति के साथ ही युवा शक्ति, किसान, गरीब, इन 4 स्तंभों पर सशक्त करने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हमारी सरकार है। राष्ट्र के विकास के उद्देश्य से अनेकों योजनाएं और नीतियों के माध्यम से हमारी सरकार विकास रथ पर आगे बढ़ रही है। सफल चंद्रयान मिशन से लेकर हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ने देश के सम्मान को बढ़ाया है। माननीय महोदय, राष्ट्रपति महोदया ने उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा है कि बीते 10 वर्ष की साधना का ये विस्तार है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर जो संशय थी वो आज इतिहास बन चुकी है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में भी बहुत कमी आई है। शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए नए कानून बनाए गए हैं। सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को भी लागू किया है, जिसका इंतजार काफ़ी समय से था। देश सही दिशा में सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रहा है। भारत सबसे तेज गति से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज टॉप 5 इकोनॉमी में हमारा भारत पहुंच चुका है। हमें गर्व होना चाहिए कि भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। साथ ही सफलता के साथ आदित्य मिशन को भी लॉन्च किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के साथ भारत के सबसे लंबे समुद्री अटल सेतु के रूप में विकास के नए आयाम स्थापित किए। भारत को अपनी पहली नमो ट्रेन, पहली अमृत भारत ट्रेन मिली। मिशन मोड में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। भारत का निर्यात $450 बिलियन से बढ़कर $775 बिलियन से अधिक हो गया है। पहले की तुलना में FDI दुगना हुआ है। खादी ग्रामोद्योग के उत्पादनों की बिक्री में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। स्टार्टअप बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गए हैं। GST देने वालों की संख्या बढ़कर 1,40,00,000 हो गई है। 2023-2024 में 12 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिके हैं, जो एक नई क्रांति का आह्वान है। मेक इन इंडिया और भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी ताकत बन चुके हैं। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्यात देश बन चुका है। हम बचपन से सुनते आ रहे थे गरीबी हटाओ के नारे, लेकिन आज हमारी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हमारा देश आगे निकला है। आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेन देन का
46% भारत में होता है। आज गांव में 4 लाख किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हो या नेशनल हाईवे की बात हो, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुना बढ़ाने के साथ ही 10,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाना हो, आज हमारा देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। 5 शहरों तक सीमित मेट्रो की सुविधा आज 20 शहरों में है। 25,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। आज 39 से ज़्यादा रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है। यह विकसित भारत के संकल्प की यात्रा का विकास रूपी प्रतिबिंब है। सभापति महोदय, मैं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी की सराहना करती हूँ। मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी समुदाय के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए कई पहल किए हैं। उनके नेतृत्व में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। उससे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने की शक्तियां मिलती है। यह मुझे उपलब्धि की भावना से भर देता है जब मैं ये उल्लेख करती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो स्वयं ओबीसी श्रेणी से है, उनके मंत्रिमंडल में कई मंत्री ओबीसी है। साथ ही मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ओबीसी श्रेणी से आते हैं। ऐसे कई निर्णय यह प्रदर्शित करते हैं कि हमारी सरकार ओबीसी हितैषी है और उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। महोदया, भव्य अयोध्या मंदिर और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हमारे गौरव का प्रतीक है। यह ऐतिहासिक पल एक प्रकाश पुंज है जो हमें एकता, नैतिक मूल्यों और हमारे महान राष्ट्र की भावना से मेल खाने वाले सिद्धांतों की ओर मार्गदर्शित करते हैं। इस मार्ग पर चलते हुए आइए हम सबका साथ, सबका विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें, यह मानते हुए कि विकसित भारत की यात्रा में कोई भी नागरिक पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा मानना है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम इस सदी के लोग हैं तो क्यों सोचे राह सरल होगी, अगर मोदी की गारंटी है तो हर मुश्किल अब हल होगी। इस भाव के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना, उसके भाव हम सब के दिलों में गूंजे और उसकी सफलता के सामूहिक प्रयास के आह्वान हेतु पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष श्री विवेक ठाकुर जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने नए संसद भवन में प्रस्तुत राष्ट्रपति के प्रथम अभिभाषण पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मुझे प्रदान किया। सभापति महोदय, आज भले ही हम नए संसद भवन में प्रवेश कर चुके हो, परंतु पुराने सदन की एक स्मृति संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। सर्वदा सयान नृपः प्राज्ञ स्वमते न कदाचन सम्याधिकारी प्रकृति सभासद सुमते स्थित। यह श्लोक लिफ्ट नंबर 4 के पास स्थित गुंबद पर अंकित है। पद्म पुराण में इसे सर्वलोक सुखप्रदम कहा गया है। सांख्य दर्शन में इसे अत्यंत लोकहितम सत्यम कहा गया है। इस श्लोक का अर्थ है कि राजा को हमेशा बुद्धिमान रहना चाहिए। बुद्धिमत्ता और समर्पण की भावना से प्रमाणिक होती है निर्णय लेने की क्षमता, और उन्हें यह सुनना चाहिए कि सदन में अन्य लोग क्या कहते हैं, उसे सभी की भलाई के लिए कार्य करना है। सभापति महोदय, आप सोच रहे होंगे कि उपरोक्त श्लोक की चर्चा मैंने क्यों की। वो इसलिए कि उपरोक्त श्लोक में जो प्रधान सेवक से अपेक्षा की गई है, उन सभी की पूर्ति हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में की। और ये बजट देखकर यही प्रतीत होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बुद्धिमत्ता और समर्पण की भावना से जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं,
वो साफ साफ परिलक्षित होता है। वरना हमने कितने चुनावी वर्ष के बजट देखे जिनमें फ्रीबीज की भरमार होती थी, परंतु ये बजट भारत के अमृतकाल का बजट है जिसमें 2047 में विकसित भारत के रोड मैप को जुलाई में प्रस्तुत करने की बात कही है। यह एक दूरदर्शी सोच के बजट का झलक है, क्योंकि यह इंटरिम बजट। जब दूरदर्शिता की बात आती है तो पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का इस सदन में डिमोनेटाइजेशन पर दिया बयान याद आता है, जिसमें उन्होंने बहुत ही नामी गामी इकोनॉमिस्ट थे केन्स, उनको कोट किया और कहा कि वर्तमान सरकार जो नीति लेकर आई है उससे वह दूरदर्शी लाभ की अपेक्षा कर रही है। पर केन्स का कहना है इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, अर्थात हमें निकट भविष्य की चिंता पर ध्यान देना चाहिए, ना कि भविष्य की दूरदर्शी योजनाओं पर। विचार करिए, ऐसे विचार वाली सरकार ने देश पर दशकों तक राज किया और इसी दूरदर्शिता का अभाव था कि जब 2014 में हम सत्ता में आए तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह स्थिति में थी। उन्हीं पूर्व प्रधानमंत्री जी का उस समय का एक और बयान अगर मैं जिक्र करूं, डिमोनेटाइजेशन को ऑर्गेनाइज लूट और लीगलाइज प्लंडर जब उन्होंने कहा था, मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनाइज लूट और लीगलाइज प्लंडर उसे कहते हैं जब देश में ऑयल बॉन्ड्स के माध्यम से तेल खरीदा जा रहा था ताकि भुगतान मौजूदा वित्तीय वर्ष में ना करना पड़े और करंट अकाउंट डेफिसिट कम दिखे। ऑर्गेनाइज लूट और लीगलाइज प्लंडर तब होता है जब बजट में लॉस और बोरोइंग की कैरी फॉरवर्ड कर फिस्कल डेफिसिट को पेपर पर लिमिट में रखने का प्रयास किया जाता था, पर वास्तव में वह अपनी लिमिट से कहीं ज्यादा होता था। ऑर्गेनाइज लूट और लीगलाइज प्लंडर तब होता है जब 2G घोटाला होता है, कोल घोटाला होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला होता है, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला होता है, और यह सब होता था एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री वित्त मंत्री के नाक के नीचे, और दोनों इस सदन के सदस्य अभी भी। ऐसी धोखाधड़ी जनता से खुलेआम की गई थी कि जिसका वर्णन कम करे आदमी वही उचित। वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि दूरदर्शिता का अभाव था और राष्ट्र के प्रति समर्पण नगण्य था। भाव एक जमींदार और जागीर का था और एक चरमराई अर्थव्यवस्था के साथ हमारा सरकार में गृह प्रवेश हुआ था। सभापति महोदय, 2014 में जब हम आए और इकोनॉमी की समीक्षा की तो हालात भयावह थे। एक जोरदार बहस छिड़ी कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी पर व्हाइट पेपर लाया जाए और देश और दुनिया जाने कि किस अवस्था में देश आकर खड़ा है। बोला ही जाता था कि भारत फ्रेजाइल 5 में, पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रसित, बैंक्स बैड शेप में है, बोरोइंग फिस्कल मिसमैनेजमेंट का अहम हिस्सा बन गया था। मैंने पहले भी जिक्र किया, इन्फ्लेशन, हालात ऐसे बन जाते कि सारे इन्वेस्टर्स भाग जाते और इंडिया इन्वेस्ट। वहां से प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में 10 साल की आर्थिक सशक्तिकरण और समृद्ध भारत की जो यात्रा पर हम चले, आज फ्रेजाइल 5 से विश्व की 5